Okay, so I will take another screen. Okay, students, so can you see my screen, everyone? Okay, so yesterday I Yes, have yes. started with the variable term, right? है ना? So क्या बताया था variables के बारे में? Variables किसको बोलेंगे? Anything that varies, right? That is called variables. That can vary. Another word you can say, in another word you can say, it is a placeholder. It is a placeholder for unknown things. Placeholder for unknown thing. So if I write 7x equal to 21, or maybe I can write 7 times. I will put a question mark or maybe fill in the blank and I ask कि 21, है ना? तो यहाँ पे अगर ये जो x है, what is this x? X is a placeholder और मे बी एक वेरिएबल, है ना? अब वेरिएबल्स को डिनोट कैसे करते हैं? वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए अपने पास क्या है? जस्ट लाइक नंबर्स, वी हैव नंबर्स, राइट? दैट इज फिक्स, 0 1 2 3 4 5 8 9 10, 8 9, these are fixed, right? If I write 5, आप कहीं पे भी 5 का मतलब सेम ही रहेगा. Either you write in physics 5, you write in the chemistry 5, or maybe in the math, everywhere 5 means 5 only, है ना? But variables changes, okay? So if you write x, y, z, or maybe t, or maybe a, or maybe anything, u and v, or maybe some another symbol, maybe delta, this a special symbol, maybe dollar sign or anything, है ना? So this can be a variable, है ना? इसका vary करेगा. That means कि अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया कि 7x is equal to 21. So if I ask you what is 7 times 21, so anyone can answer, right? 3. 3 7 times 3, that gives 21, right? Same question I ask you, what is 5 times 20? So you will answer, sir, 5 times what is Four. 20? So 5 Four. times 4, 4, right? So here x will be 4. So you can see here in one question I'm getting x is equal to 3, and in one question I'm getting x is equal to 4. See, so it depends on the question कि question कैसा है, किस constant में बात हो रहा है ना? So it depends, it varies from question to question. But अगर मैं 5 कहीं पे लिखता हूँ, if I write 5 into 4, it will give 20. I will write 5 into 5, it will give maybe 25. See, this 5 means everywhere same, ये change नहीं होगा, है ना? So again we will learn algebra. Algebra is the combination of numerical value and this variable, है ना? So there are two parts. If I will start algebra, there will be two part of this. One is like expression and second is equation, which I have already written. Okay, one is expression and second is equation. So what is expression? What is expression? Expression is combination of variable and constant. So I told you variables क्या क्या होते हैं? Variable is x, y, z, t, u, v, maybe a, b, anything. And numbers all we know, है ना? या constant. Constant is also called number. Okay, numbers. So expression is nothing but combination, और expression कैसे बनता है? Variable and constant को मिला के. So combination means what? Mathematics में आपने क्या पढ़ा? Subtraction पढ़ा, multiplication and division. So it can be addition of numbers and variable. It can be 5 plus x, or maybe x into x, or maybe 5 minus x, or maybe 5 into x, है ना? और 5 into, or maybe division by x, or maybe x divided by y, है ना? So it can be, all combinations are possible, number to variable, variable to number. Okay, so if any new student join today, just write down this thing and write down this example. So here you can see this example, x plus 3. X is a variable, 3 is a number, and addition symbol. Okay, here 2 into y and 5. So I told you, if you write multiplication, no need to put any sign, it is understood, 2 into y. If you want to divide it, you have to mention division sign, or you have to write like this, 2 upon y.
बट इन मल्टीप्लीकेशन नो नीड टू पुट एनी साइन, कोई भी साइन देने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड। ओके, अगर मैं कहीं पे ऐसे लिखता हूँ एक्स एंड वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक वेरिएबल है इनटू वाई दूसरा वेरिएबल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ, नो नीड टू पुट एनी एडिशनल साइन है, it is under, okay. So whenever you see this kind of thing, you understand that these are in multiplication, 4x, so 4y and x, these three are in multiplication, this 7 in addition, okay. और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अनदर लाइक एक्स स्क्वायर और मे बी 3x cube y square, okay. So these all are example of expression, okay. तो आई थिंक जो कल कल स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था उनके लिए ये न्यू नहीं होगा, उनको पता है कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है। तो एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प, इज फॉर्म फ्रॉम द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सो इट इज ए कॉम्बिनेशन, यू कैन से कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। सम मोर एग्जांपल यू कैन सी expression. So if I write x y square plus y, so here only variable. This is the example of expression. What is equation? What? Okay. Sir, your Since voice is breaking for me. voice is breaking, Sir, or your voice is is it breaking. better now? Just a minute. I'll make you the host. Hello everyone, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. अभी ठीक है? Okay, so अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स लाइक लक्ष्य मेरिदनी, यू कैन मेक ए नोट with this, okay. And Rubir and Mansa, I think you have noted down, so no need to write again. Yes, Okay? sir. So just make a Okay, note what sir. is expression and some example, what is equation and some examples. Yes, sir. Done writing. ठीक है, जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं, नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, वी कैन ऐड टू नंबर्स, we can multiply two numbers, we can divide two numbers, we can subtract two numbers. Similarly, we can add two variables, we can subtract two variables, or maybe y x plus y, subtract two variables, we can multiply two variables, we can divide two variables, okay. And we are going to learn these things in this chapter. This is new to you, how to add two variables, how to subtract two variables, how to multiply two variables, and how to divide two variables, because ये आता है आपको numbers से, you are comfortable with the numbers, now you have to be comfortable with this variables, okay. Okay, so I think you have noted this. So remember, the equation use the equality sign, if it is missing then it is a expression, है ना। so यहाँ तक हो गया, yes, okay. Next heading, give terms, factor and coefficient. Next give heading, terms, factor and coefficient. So again, let me talk a expression or maybe equation, है ना। So let me take a expression. So if I write a expression like this, what is this? This is a expression. If you put equality sign, then it will become a, अगर मैं equality का sign देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, equation बन जाएगा. But Equation. till now it is a expression.
this is a expression. Okay, so again, if you see here, in between plus or minus sign, whatever terms you are able to see, that is called terms. Okay, so if you take example, this expression is made up of two terms. First term is this is one term, this is first term, you can say, or you can say term number one, and this is term number two. ओके, सो इन बिटवीन प्लस और माइनस साइन, है ना, यहाँ पे जो 4x है, 4x का मतलब क्या हुआ, 4 into x. सो अगेन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन साइन को आपको इग्नोर करना है. वेन एवर यू सी द प्लस एंड माइनस साइन, whatever terms is there, we can say number of terms in that expression. Okay, so you just write down this example, take the expression, this expression is made up of 4x and 5x, 5, so that is two terms. Okay, again I will take one more example. If I'll take x square minus x plus 5, and if I ask ki how many terms in this expression, can you answer, students? If I write x square minus x plus 5 and I ask ki how many terms in this expression, then One. what will be your answer? One only? One. Sir, one, sir. See how many plus. अच्छा, 4x plus 5 में कितने terms है? This expression is made up of two terms. This is called one term, this is called second term. So total number of terms here is 2. Similarly, if you see this minus sign, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है. So plus minus sign के बीच में जो भी उसको terms बोलते हैं. So this is one term, this is second Sir, term, three and terms. this Three is terms. Sir, 3. So three terms. total number of terms is 3 terms. अभी ठीक है? ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. x 5 plus 8 minus 3. Okay, so how many terms here? Sir, Four two. terms. Four terms. Sir, four. Four. How many terms? Four terms. Okay, listen carefully. Listen carefully. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 8 है और -3, so you know how to subtract, right? ये numbers है. Can you simplify it? Yes, you can simplify it, and you can write like this. Now you cannot simplify it further. Now you cannot simplify it further. अभी इसको simplify नहीं कर सकते ना? Can you simplify it? No. Further you cannot simplify it. So now you decide how many terms. That is 3. 3 terms total. Three. जहां पे एडिशन सब, जहां तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो तो आप कर दोगे ना. सिंप्लीफिकेशन है ये तो ये तो हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, राइट? So write down this example, write down this example, this example, all examples you note down. Sir, noted down. Okay. Next, just make a note. ये पॉइंट वाइज लिख दो. टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन. सो आप टर्म्स को अगर ऐड करोगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक्सप्रेशन. तो मेक ए नोट पॉइंट वाइज. आप फर्स्ट पॉइंट इसको लिखोगे, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज टर्म देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स. सो ये लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. So again, expression is Yes, sir, nothing done but right. addition of terms, right? Or maybe combination of terms. Okay.
So terms then themselves can be formed as the product of factors, है ना? Factors सबको पता है factors. If I write 12, if I ask you what are the factors, or maybe write the factors of 12 factors, और मे बी आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टर. कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, है ना? सो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? दैट इज 2, 3, 5, 7, है ना? सो दीज आर द प्राइम नंबर्स और डॉट डॉट डॉट. सो फर्स्ट यू डिवाइड विद दिस नंबर विद द 2. 2 से डिवाइड किया, है ना? सो 2 से डिवाइड हुआ तो फिर आया 6. सो आई विल राइट 2, 2, 3. सो आई विल राइट लाइक दिस. दीज आर द फैक्टर्स, राइट? आप ऐसे करते हो ना फैक्टर्स, Yes. या Yes, नहीं पता फैक्टर्स करने का? sir, Okay, पता है if sir. I write 4x and I ask what are the factors, write down the factors. So then what you will write? 2 to power 2, 4 को लिख सकते हैं 2 to power 2 into x. Or maybe if I ask x square y square and write down the factor, then what you can write? You can write 2 square into x. X square means what? 2 times multiplication of x. Why into Y square means what? Y into. So these all are called factors. This is called factor. This is called factor. This is called factor. These all individuals are called factor. क्लियर है सबको, है ना? सो ये पॉइंट, Yes, sir. इसके एग्जांपल्स लिखो, देन यू कैन राइट द एग्जांपल्स of below this. These are the example. This is the first example of this point. This is the second example. So I think terms and factors are done. Third one is coefficient. Write down coefficient. इसको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल में. सो राइट डाउन कोफिशिएंट. ओके, सो टर्म इज वेरी इजी. हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्म्स? टर्म्स, जो आप कोई भी एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दोगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं जब होगा, वेन एवर यू स्टॉप simplification, okay, from there you have to see how many terms. ठीक है? so प्लस माइनस के साइन के बीच में जो भी होता है वो टर्म्स कहलाते हैं. ठीक है? कोफिशिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कल भी बताया था, जिन लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड किया था ना, कि जो भी नोमेरिकल वैल्यू, सपोज ये एक फैक्टर है और ये एक टर्म है, सॉरी दिस इज a term, whatever numerical value is multiplied with this is called coefficient. This is called coefficient. If I write 5x square and I ask what is the coefficient here, this numerical value is called coefficient. If I write x cube and I ask what is the coefficient here, आप लोग बताओ what is the coefficient here? If I write x cube and I ask what is the coefficient here? The 1. If nothing is there, One. 1 तो हमेशा One. रहेगा ही रहेगा. मल्टीप्लाई, है ना? Yes. If I write minus 7x cube and I ask what is the coefficient here? 7. Coefficient क्या है यहाँ पे बताओ? Minus 7, not 7, Minus. minus 7, because this minus is Minus. associated with this number. है ना? So numerical, write down the definition. The numerical factors of a term is called its numerical coefficient or simply coefficient. So write down the definition and then you can write this example. This is example number 1, this is example number 2, this is example number 3, this is example number 4.
Noted everyone? No, sir. Noting, sir. Okay, no problem. Note it down. So numerical value which is associated with the terms is called coefficient. If minus is there, mind it, you have to take that minus sign also. Like in example, minus 7 x cube. The coefficient there is minus 7, not 7. 7 नहीं है, minus 7 है coefficient. ठीक है, यहाँ पे ये important point था कि minus भी आपको लेना होता है. Sir, noted. Okay. Okay, you have noted this also. Okay, so let me. Yeah, I have x cube minus 5x square plus 8 plus. Okay, if I ask how, can you answer? I have one example, x cube minus 5x square plus 8 plus 8. How many are there in this expression? Anyone? Ruvir, can you answer? How Sir, many can you terms? repeat the question? Hello, ma'am. Can you make me host again? Yes, sir. Uh, Sushma, ma'am. Hello. Hello, sir. Yes, sir, students. Just wait for 1 minute. I'm asking ma'am to make me host. Okay. Just one Okay, second. sir. Yeah, yeah. I'll make you the host. I lost connect. Ah, okay. Today your network is bad. Yes, ma'am. Little bit problem facing. Yeah. You can be little louder also. Yeah, you are the host now. Okay, ma'am. I'm using. Okay, student. I have one question for you. Can you answer this? Yes, sir. यहाँ पे एक expression लिखा हुआ है. I'm asking how many terms are here in this expression? How many terms? How many terms 4. in this expression? Sir, 4. answer is 4. Yes, answer is correct. Sir, 4. Second question. What is the coefficient? What is the coefficient? Coefficient of term minus 5x square. Minus 5x. What is the coefficient of term Minus 5. Minus 5. minus Sir, minus 5. only minus 5, right? Minus, yes, minus 5 only. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो सब लोग.
जब भी मैं कोफिशिएंट्स पूछूंगा, सो कोफिशिएंट्स विल बी ओनली रिलेटेड टू द टर्म ओनली, राइट? एक टर्म्स का कोफिशिएंट होता है, पूरे एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट नहीं होता है ना? इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो 1 है, यहाँ पे पूछूं तो -5 है, यहाँ पे फिर से 8 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो देर आर सो मेनी कोफिशिएंट, बट प्रिसाइजली कि विच टर्म्स आई एम आस्किंग, है ना? कभी भी आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, सो आप प्रिसाइजली पूछा जाएगा कि इस टर्म का कोफिशिएंट बताओ, मे बी इस टर्म का कोफिशिएंट बताओ। पूरे एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट नहीं होता है कभी भी। ठीक है, इफ एक्सप्रेशन हैज मोर देन टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स, है ना, तो कोफिशिएंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, ओके, आई गेस नेक्स्ट हेडिंग, Okay, गिव sir. हेडिंग टाइप types of expression, maybe types of expression. So again, it is very easy. Types of expression. So based on number of terms, we have divided into three form. Okay, three types. First is monomials. If expression contain only one term, is called monomials. It is very simple. Mono means one. मोनो का मतलब वन होता है, बाय मीन्स टू होता है, एंड पॉली मीन्स मेनी होता है ना? एक्सप्रेशन, if the expression, so you have to write down in the point wise. One point you write like this, second point you write like this is called, ठीक है? And if there is third term, then you can say trinomial, and so on. If there is multiple terms, or maybe in general, if an expression containing one and more terms with non-zero coefficient, that is called polynomial. Okay, so write down these 3 points. First is monomial, second is binomial, and third is polynomial. And you can write down the examples also. So these are the examples of monomials. Here you can see only one term, that is why it is called monomials. This is two terms, you can see binomials. You can see three terms, that are called trinomials. Polynomials may have many terms. Okay, so if one term, then also you can say polynomials, है ना? But more precisely, one term you can say monomials. Noted, everyone? Yes, sir. Sir, voting, sir. Sir, noted down. Okay, good. So this is for definition only, and in sometimes exams में आते हैं आपके questions, 3-4 expression दे देंगे, and they will ask कि identify which is binomial or maybe which is monomials. Okay, so it is very easy to recognize, right? Only one terms, then it is a monomials. If two terms, then it is binomial. More than two terms, or it is called polynomials. Okay, next give heading like terms and unlike terms. So from here it is, this chapter starts actually. This is very important. Like terms and unlike terms. If you understand this concept, then you will do the addition, subtraction, multiplication, and division of algebraic expression.
So it is very very important, write down like terms and unlike terms. Okay, okay, listen carefully. If you have noted the heading, listen carefully. जब मैं बोलूंगा लाइक टर्म्स, सो ऑल भी नो कि टर्म्स किसको बोलते हैं, सबको पता है टर्म्स क्या होता है ना. सो लाइक टर्म्स कब होगा, जब वेरिएबल जो है, वेरिएबल सेम होगा. सेम मीन्स व्हाट, पावर भी सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए. सो वेरिएबल्स के पावर एंड जो सिंबल होते हैं, पावर प्लस सिंबल, बोथ मस्ट बी बोथ मस्ट बी सेम. So let me write down some example. Okay, example. If I write 3x square and I write minus 5x square. So is this two term like term or not? How to check? How to check like terms? पहले तो आपको numbers को forget about this number. You have to focus on variable. Variable पे focus किया. यहाँ पे भी variable पे focus किया. दोनों जगह variable same है. Yes, variable is x. Okay, variable is x. Power of variable, in first part it is 2 and in second part it is 2. Okay, so in both the places power is 2 and variable is x. So you can say these two are like terms. So these two, term 1 and 2 are like. समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? लाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे, आप लोग लिख लो. पहले हेडिंग लिखा, उसके नीचे लाइक टर्म्स. तो हाउ टू रिकॉग्नाइज लाइक टर्म. तो लाइक टर्म वेरिएबल विल बी सेम और सेम वेरिएबल, यू कैन राइट सेम वेरिएबल इज कॉल्ड लाइक टर्म्स. सो सेम वेरिएबल and more precisely if I say same means what, you have to check the symbol as well as power. So power and symbol are both must be same. So power and symbol, power and symbol both must be same. So you can say that two are like terms. Example, 3x square comma 5x square minus 5x square. These two are like terms. So how to recognize? First you have to check the variable. So variable यहाँ पे क्या है, 5x है, यहाँ पे भी x variable. Variable are same. Okay, good. Next you have to check the power. So if power is also same, see here 2 is the power, 2 is the power. You need not to focus on this. ये numerical value पे focus नहीं करना, ये coefficient पे focus नहीं करना. Just look at the variable and power. Same, then it is called like terms. Another example, I'm writing another example. X cube minus 5x cube and x or 7x cube. Okay, so again, is this three are like terms? ये like terms का example है? Yes, sir. Students, can you answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How to check? How to check? You have to check the variable. So variable यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, and यहाँ पे भी x है. That is okay. Next, power here is 3. Variable का power यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है. So we can say all these three are like terms. And if this condition is not fulfilled, then another is called unlike terms. अगर ये condition fulfill नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, unlike terms बोलेंगे. Example of unlike terms. Example, unlike terms. So if I write 7x and 7x square, तो क्या यहाँ पे ये दोनों like है या unlike है, बताओ आप लोग. Unlike. Unlike terms. Why?
वेरिएबल Because the power is not वेरिएबल्स तो सेम Because है, the power x is यहाँ not पे there भी for 7x plus 1. power is 1 and power is 2. Yes, these two are called unlike terms. Okay, so this is very very important. If you are able to recognize like terms and unlike terms, then only you will solve the question. You will able to solve, otherwise you will not. ठीक है? Okay, so ये हटा दूं मैं? I'm writing some more. You have to answer. I'm writing some more example. Example x square y or maybe y square. Example 7x square x square. Example a square b. Example 4l comma 5l. Example m square minus 5 m. Example x cube. Okay, students, so I have few examples. You have to say like or unlike. So first example is like or unlike. These two terms are like or unlike. Unlike, sir. Unlike, sir. Unlike. Unlike How? term, sir. Sir, Sir, because the Because the, power is patient because different. sir, for y yes, the sir. power is not there in the Sir, first because one, and second one the power is there for y. yes, sir. Yes, so here variable is x, here variable is y. So in this term we have variable x and y. Here also we have variable x, y. But power of x is 2, power of y is 1. Power of x is 1, power of y is 2. So power is not same. Variable तो same है, but power same नहीं है, इसलिए unlike term. In this example, second example, Yes, sir. They're right. Sir, They're like. Sir, they are like. they are, these sir. are like. Yes, sir. Like, Unlike. Next, third example. Unlike है. Unlike है. Sir, unlike. Unlike इस यहाँ Sir, पे unlike. वेरिएबल ए एंड बी है और यहाँ पे ओनली ए है. ओके, गुड. नेक्स्ट, Sir, like. Yes. like terms, correct. Next, fifth Unlike them. example. Unlike them. Unlike them. How? Sir, because the power one is negative and one other one is positive. Another one is present. Yes, here -2 power and here 2 is the power, इसलिए unlike term. Okay, next. Unlike, Sir, sir. not same. Unlike. Sir, unlike. Unlike. Okay, good. So you note down these examples, also, and next heading, addition and subtraction of algebraic expression. So after writing this example, next heading is addition and subtraction. So just like हम लोग numbers में जैसे सीखा है, पहले addition सीखा है, फिर subtraction सीखा है, फिर multiplication सीखे हैं, फिर division सीखे, वैसे ही हम लोग करेंगे. पहले addition सीखेंगे, subtraction सीखेंगे, फिर multiplication, then division. Okay? But here हमेशा वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, ए होगा, बी होगा, नंबर होंगे, ऑल आर देयर, ऑल विल बी देयर. ओके, this example and then give this heading.
Noted everyone? Yes, sir. Okay, so next give heading addition and subtraction of algebraic expression. Okay, so I'm removing this all, I'm erasing this examples. So again, before below right below this heading, write down addition and subtraction, addition and subtraction is only possible between like terms. क्या लिखा मैंने? What you understood with this? What do you understand with this statement? Addition That and subtraction is only possible between like terms. So if I write, let me write some example. If I write 7x square plus x square minus, oh sorry, x square plus 5 plus x, and another example, x square plus y square. Or maybe if I ask add x square and z square plus y square. Okay, so listen carefully, I have three examples. From example it will be more clear to everyone. ठीक है, ये मैंने ये लिखने का मतलब क्या हुआ? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, इज ओनली पॉसिबल बिटवीन लाइक टर्म्स. इसका मतलब क्या कि जो सिंप्लीफिकेशन है ना, वो फर्दर सेम टर्म्स के बीच में ही हो सकते हैं या लाइक टर्म्स में ही हो सकते हैं. हेयर इज देयर लाइक टर्म्स, these two are like terms, so you can simplify it further and you can write it is like, आपको कैसे ट्रीट करना है, इट्स लाइक एप्पल, दिस इज लाइक एप्पल, 7 एप्पल प्लस 1 एप्पल, इट विल बी 8 एप्पल. और इट्स लाइक ब्रदर, ये भाई भाई लाइक टर्म्स है ना, एक जैसा वाला टर्म्स है ना. नाउ 7 यहाँ पे है एंड ये 1 है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, प्लस 8. एंड दिस 5 यू कैन नॉट ऐड बिकॉज इसका कोई भाई नहीं है, सिमिलर लाइक टर्म्स नहीं है इसके, तो 5 विल बी रिमेन एज इट इज and this will remain as it is. Here, can you add these two? No. So answer will be x square plus y square only, because these two are unlike terms. We cannot simplify them further. Okay. If I ask add these three, if I ask add these two, then what you have to do? You just write x square plus z square plus y square. Can we simplify it further? No. So further no, sir. simplification is not possible. So you just write answer x square plus z square plus y square. This is the answer. ठीक है. So addition and subtraction like terms में होगा. That means what? You can simplify further between like terms. You can simplify further like terms, or you can add and subtract further between like terms. Is this clear, students? This is also addition. ये addition ही है, ये Yes, sir. addition ही है, but unlike terms का है. So we cannot simplify it further. We cannot simplify it further. So we will keep as it is. We will leave it. इसको यहीं पे छोड़ देंगे because इसके इससे ज्यादा simplification नहीं हो सकता इसका. But यहाँ पे चांस है सिंप्लीफिकेशन का कि ये लाइक टर्म्स है, इट्स लाइक ब्रदर. ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है. यहाँ पे 7 है और ये यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है, इसका कोई ब्रदर नहीं है, मे बी इन में, सो वी विल लीव एज इट इज.
Understood one? So further simplification is possible between like terms only in addition and subtraction. जब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वहां पे लाइक टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। अनलाइक टर्म्स को हम लोग एज इट इज रहने देंगे और वही आंसर होगा आपका। ठीक है, सबको आ रहा है? रुबीर एंड मानसी, मानसा, आर एबल टू अंडरस्टैंड? लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य आपको आ रहा है समझ में? Yes, गुड, sir. गुड। So we will do some example. It will be more clear to everyone. Okay. So write down example. Add. Can you see this example? Let me scroll down. Okay. So I have two example. First example is add these three expressions. So there are three expression, one expression, two expression, and three expression, third expression. You have to add these three. And in next example, you have to subtract from this. So addition and subtraction जैसे हम लोगों ने नंबर्स में किया वैसे ही करना है, बट यहाँ पे आपको माइंड क्या करना है कि लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। अगर अनलाइक है तो फिर वो ऐसे ही रह जाएंगे। Sir, यस, यस लक्ष्य। So where do we have no, to? sir, no, sir. So where do you have to write the answer? I mean, we have to tell you the answer directly, or do we have to write it in the chat? You just note it down in your notebook. I will ask the answer at the end, or maybe I will solve. You verify your answer. ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है? Okay. You have to add this 7yz minus 3zx, then add 4xyz. You have three expression and you have to add them. This is like three expression and you have to add them. So just like numbers में अगर मैं बोलूं कि 3 plus 5 plus 9 कर, similarly I'm doing this plus. Okay, so here minus sign ये minus रहेगा 3xz plus 5. So you have to add this all. Okay, these many terms are there. You have to add these many terms. Okay, then what is your answer? So should I tell the first answer? Everyone solve? सबने ट्राई कर लिया? रुबीर, मानसा, लक्ष्य? मानसा आप बताओ आंसर, आपका क्या आया? Sir, solving. Okay, okay, solve it, no issue. If you are done question number 1, Mridni, you can try question number 2. Okay, sir.
Okay, everyone. So I'm solving here. You can cross check your answer. So first of all, whenever you see these many terms, how to start? You have to mark it like 7xy. So xy और कहीं पे है क्या? xy that means इसका कोई भाई है क्या यहाँ पे? है ना? xy देखेंगे यहाँ पे मिला. Okay. So these are like terms. You can see I am underlining them in the black color. So यहाँ पे क्या है 7xy and this is minus 2xy. It's like 7 apple. This is like apple minus 2 apple. So what will be answer? 5 apple. So I will write 5xy. Is clear? So your voice is breaking again. Yes or no? Okay, next is yz. Will mark here yz. I will search for like terms. So this is like no. This is like terms. Yes, yz, and we don't have yz. So I will add this 5yz plus 4, so it will be plus 9yz. Understanding, everyone? Next I will write Yes, sir. zx. So again these two brothers or maybe like terms you can think, है ना? तो कैसा है -3zx plus 9zx. It's like -3 apple and plus 9 apple. कितना होगा? Plus 6zx. अच्छा यहाँ पे भी एक zx है, सॉरी. तो दिस इज ऑल्सो ए लाइक टर्म. तो So, but that is XZ, right? -3 प्लस, हाँ xz और zx इज ओके ना. दोनों में आप Yes. कैसे चेक करोगे लाइक टर्म्स? क्या वेरिएबल सेम होना चाहिए? वेरिएबल सेम है. यस, xz है और सॉरी x है एंड z है. यहाँ पे भी x है, z और z और x है. पावर सबका सेम है. यस, पावर इज एवरीवेयर सेम. z का पावर 1 है, 1 है, 1 है. यहाँ पे भी इसका पावर भी सेम है ना? सो वी हैव -3 एप्पल plus 9 apple, that is 6 apple, and then -3 apple, it will give 3 apple only. So 3z. You write xz or zx, doesn't matter, both are the same. आप कैसे लिखते हो? 5 into 3 लिखते हो या 3 into 5 लिखते हो? बोथ सेम ही होता है ना. वैसे ही Yes. zx लिखा या xz लिखा, बोथ आर द सेम. ओके, नेक्स्ट आई विल सर्च फॉर y. सो इसका कोई भाई है या इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, सो No. इट विल रिमेन एज इट इज. नेक्स्ट 5xy. 5xy इसका भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐसे रह जाएगा. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. 5xy plus 9yz plus 3zx or xz. You can write xy or yx, both are the same, both are the like terms. क्योंकि xz और y में कोई डिफरेंस नहीं है. अंडरस्टूड एवरीवन? सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, गुड. Now second example, subtract this whole term. You have to subtract from whole term or maybe in this expression. So from this expression, subtract this expression. So example 2 is also done. Okay. Okay, just wait for 1 minute. I will solve and you can cross check your answer. Let everyone solve. Everyone try this question. बहुत ये basic है, like chapter का ये बहुत ही basic. If you don't know addition subtraction, then multiplication कैसे सीखोगे? So you have to learn the addition and subtraction of algebraic expression. तभी आपको multiplication आएगा, तभी आपको division आएगा. जस्ट लाइक नंबर्स को हम लोग जैसे ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं,
डिवाइड करते हैं, वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग ऐड करना सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे एंड डिवाइड करना सीखेंगे. Okay, so I guess this is done. So I'm removing this. Okay, so what is the question? Question number second is saying subtract this from this. So this is one expression. This is one expression. 8 5 minus 3y. From this expression, you have to subtract this expression. Okay. So first of all, what we'll do, we will open this bracket. पहले भी बताया था, कल भी बताया था, है ना? इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है ना? So if you open bracket here, no impact because sign is positive. So if you open bracket here, no change. You just write whole expression as it is. But if you open bracket here, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे +1 है और ये क्या है? मल्टीप्लाई होना है, राइट? सो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करती है, सबको पता है ना? प्लस Yes, sir. इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये सबको पता है. अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, है ना? तो वैसे ही ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, है ना, तो इट्स लाइक मल्टीप्लाई, यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. तो इफ यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा, है ना? तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -5x². If you multiply this minus with this minus, it will become plus 4y². This minus into plus, that will give -6y. This minus multiply with minus become plus, that is 3. और you can directly आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. Simple. Okay. Now you have to look for the like terms. So I will start with this. Do we have like terms? I will check this, and आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, मार्क करना है, ठीक है? अदरवाइज मिस हो जाएगा, ठीक है? Now it's like apple, 7 apple minus 5 apple. You have to write 2 apple. Simple. फिर से इसके like terms ढूंढते हैं. 4xy, नहीं, we don't have xy, I will write xy as it is, so no change. I will check for y². So y², yes, we have y², like 8y² plus 4y², total कितना? 12y². Next 5x, do we have x वाले टर्म है? नहीं है, so I will write plus 5x as it is. Next, this is also 3y. 3y, yes, we have terms, y वाले terms है, तो 3y minus 6y कितना होगा? 9y -9y. and this, ये तो सिंगल ही है 3, तो फिर 3 as it is रह जाएगा. और maybe I can use the different color, so no confusion. तो यहाँ पे प्लस दिख लिया. ठीक है? आ रहा सबको समझ में? ये आंसर है, ये फाइनल आपका आंसर. दिस इज Sir, I got the same answer. Yes, sir. Even I got the same answer. yes, good.
So in exam you have to do same way, underline करना, otherwise बहुत सारे terms होते हैं ना, let's say 20 terms है, maybe 15 terms है, तो कुछ terms मिस हो जाते हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन आप करके रखोगे तो मिस नहीं होगा, और ऐसे ही करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके okay, so I have some more examples, so I will take 1 and 2 example randomly. So I have you just solve this question and this question, 2 examples आप लोग करो ये, you have to add the following, so you have to add these two and you have to subtract this from. So only the ones you marked, right? Sir, Yes, this is only homework which I or marked. No, you have to solve it. I want to solve or not, I want to check. आपको यही solve करना है. Sir. I'm underlining this. You have to solve this 2 question Okay, here sir. only. होमवर्क तो रहेगा ही Okay, ना, sir. बट अभी सीख रहे हैं ना. Everyone try this question. These are very simple questions, but make you, I mean, आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको बहुत कंपलसरी है, आना चाहिए आपको. for problem completed? Yes, sir. First problem completed. Okay. Try second question. Okay, sir. So second problem is also almost complete. Subtract this from. Okay, Meridni. So if you have completed, just wait. Let others solve. Okay, so let me write. You have to add 2p square q square minus 3pq plus 4, and you have to add 5 plus 7pq minus 3p square q square. Okay, so listen, यहाँ पे देखो सब लोग, you have to add these two. So I will start from here. I will look for the like terms, और इसका भाई कोई है क्या? तो यहाँ पे है, yes. Then it's So the like answer, the 2 final and answer is minus minus p square q Minus square q plus square 4pq q square. plus 9. Please, sir. So like terms है इनके, yes हैं. Then you have to write, yes, your answer is correct, Medni. And I guess कि सबका सही आया होगा आंसर. And here we have items और this is numbers, right? Numbers को तो आपको ऐड करना आता ही है इसमें, like और unlike. So this is final answer. Sir, my first answer is p square q square plus 4pq plus 9. Sir, is it correct? माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ना, माइनस आना चाहिए. इट्स लाइक -3. 2 में से -3 करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा ना.
ये तो एप्पल है। सर माइनस पी, सर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सर। तो करेक्ट 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 करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, from this you have to subtract this from this. So okay, so you have to write like this: 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. In this you have to subtract this whole term, so that is p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 8p plus 7q। ओके, तो अभी बताया था जब अगर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब क्या होगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हर जगह पे साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, ओके, एंड देन सिंप्लीफाई। तो ओपन करो ब्रैकेट, so let me open this bracket. So it is 18 3p 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. Okay, so I am opening bracket here. It sign will get change, right? तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर क्यू, फिर ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, दैट इज 3pq, फिर से माइनस 5pq स्क्वायर, फिर प्लस 8p, फिर माइनस 7q प्लस 10। नाउ यू हैव टू लुक फॉर द लाइक टर्म। सो दिस इज नंबर्स, नंबर्स को नंबर्स के साथ करेंगे हम लोग, है ना, एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। एक और नंबर है, so 18 plus 10 that is 20, this is done। नेक्स्ट 3p, so p है क्या कहीं पे, लाइक टर्म्स है क्या इसके, yes we have like terms। okay, so it is minus 3p plus 8p, minus 3p plus 8p, है ना। so it's like minus 3 apple plus 8 apple, it will give 5 apple, 5p लिखेंगे। next q, do we have q, q, yes we have q है, so 11q minus 7q total 18q। फिर से नेक्स्ट pq, do we have pq, pq, yes we have pq, so 5pq plus 3pq total 8pq। next, okay, so pq square, so you have to look for the pq square, yes we have pq square like term, so minus 2 minus 5 minus 7pq square। so last we have 8pq और 5pq, यहाँ पे भी pq, p square cube, so 4pq square minus, so total it will be plus 1 p square। so this is your final answer। Sir, I got 28 plus 5p minus 18q plus 8pq minus 7pq square plus 2 square p square q। क्यू कैसे आया आपका, यहाँ पे कितना, ये 5p स्क्वायर क्यूब है ना, इसका लाइक टर्म्स देखो ये है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इट्स लाइक एप्पल। फिर से तो 5 एप्पल माइनस 4 एप्पल, कितना एप्पल होगा, प्लस 1 एप्पल। ये तो स्क्वायर है ना, ये तो p पे स्क्वायर है। Yes sir, देखो यहाँ minus 18q plus 8pq
minus 7pq square plus p square q, sir. Correct, correct. Your answer is correct. Okay. Your answer is correct. See here, I have wrote the same thing, right? I have written the same answer. Yes, sir. Okay. I hope यहाँ तक सबको clear होगा. Okay. Okay. नेक्स्ट गिव हेडिंग. आई थिंक अभी आप लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से. इफ यू वांट यू कैन टेक दिस होमवर्क एज ए होमवर्क. यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, है ना. जो कर लिया वो ठीक है. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन you can take a screenshot and you can try this question at your. Okay. Okay students, so you can make a note or maybe you can, these are homework. Okay. Next heading, give multiplication of algebraic expression. Give heading multiplication of, write down multiplication of algebraic expression. Yes, sir. Done, students? Okay. Okay. So in this also, if you have like term simplified further, if you have like terms, if you have like terms in multiplication, then further simplification is possible. Okay, so if you have like terms in multiplication, then you can multiplication लिखना था ना, multiplication. So okay, and if you don't have like terms in multiplication, so you have to keep as it is. Okay, so I will take easy example first. Suppose you have to multiply these two. You have to example 4 multiply with 7p. Then what is your answer? क्या आंसर होगा बताओ. आपको 7 एंड 4p को मल्टीप्लाई करना है ना. तो ये नंबर से मल्टीप्लाई होंगे. यस, इट विल बी 28. एंड देन 28p, sir. p का कोई लाइक Yes, टर्म्स sir. नहीं है, P. तो यू हैव टू कीप p एज P. इट इज. ओके, इफ आई आस्क व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस टू माइनस 4p 7p का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा. So see here, okay, I will write next example. Or minus 28p. 7p. Okay, listen carefully. Oh, oh. Sir, Listen carefully. minus 28p square. Yes, correct. So if I write x square, what does it mean? It means x की square मतलब क्या होता है? p into p, two multiplication. If I write q, इसका मतलब p into p. If somewhere this you can write like this. अगर ऐसा लिखा है तो p that is p square. क्लियर है? यहाँ पे बताओ, इस क्वेश्चन में बताओ, इस एग्जांपल में क्या है ना. इसके बाद Sir, Sir, 28. थर्ड वाले का होएगा minus 28p square q. यस. सो इन थर्ड यू विल गेट नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा. p को लाइक टर्म्स है, p है, तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर आएगा. एंड q का लाइक टर्म्स नहीं है तो q एज इट इज रह जाएगा, है ना. तो ये फाइनल आंसर होगा. वैसे ही यहाँ पे बताओ फोर्थ एग्जांपल.
Sir, it will be 4. minus 12 p raised to 4. Yes, you are correct. Answer is minus p पे power 4. Correct. ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपने इजीली कर लिया। ओके, यहाँ तक हो गया सबका। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन विच इज इन ब्रैकेट। ओके, तो ये हो गया ना सबका, एग्जांपल्स इतने लिख लिए ना आपने। वैसे ही 4p को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, नो नो डाउट अबाउट दिस। 4p इंटू 0, 4p को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट राइट डाउन एग्जाम्पल और मेरे क्वेश्चन ट्राई करो। यू हैव टू मल्टीप्लाई बायनोमियल्स विथ दिस बायनोमियल। ओके, अभी तक आप मोनोमियल्स को कर रहे थे, राइट? नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क। अगर इस चैप्टर में आपने ये वाले मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, दैट मीन्स यू हैव लर्न समथिंग इन दिस चैप्टर। इट इज क्लियर स्टूडेंट? ओके, so how to multiply this, listen carefully। so ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये जो टू टर्म्स है, ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इफ आई राइट 2x एंड ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई 3x प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सुनो सब लोग ध्यान से, मैं भी कल भी बताया था कि ये जो टर्म है, जो आउटसाइड में, जो दूसरे ब्रैकेट में, वो टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और विथ साइन, जो साइन है इसका इसका अगर सपोज यहाँ पे मैं माइनस दे देता हूँ, विथ साइन यू हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसको ओपन करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो क्या मिलेगा? -2x इंटू 3x, ये पूरा एक टर्म मिलेगा, दैट कितना आएगा? -6x²। तो आप क्या लिखोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -6x²। देन -2 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तो ये कितना आएगा? -10x। so this will give -10x। so together answer is -6x² -10x। समझ में आया क्या किसी को या नहीं आया? This outside the bracket means what? You have to multiply with each and every term with a sign। ओके, आपने पढ़ा होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये आपने पढ़ा होगा AB प्लस BC, राइट? और कहीं पे ऐसा लिखा है, देन यू कैन राइट लाइक दिस। इफ समवेयर इट इज रिटन, यू कैन राइट लाइक दिस, है ना? आई एम डूइंग द सेम थिंग, बट -2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपको मेंटली भी कर सकते हो या साइड में कहीं पे लिख के कर सकते हो, और फिर उसको यहाँ पे लिखो। फिर वैसे ही -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, +5 है, यहाँ पे +5 है, तो क्या आएगा? -10, फिर यहाँ पे लिखिए, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो पहले इसी एग्जांपल से ट्राई कर लो, पहले यही लिख लो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, -2x इंटू 3x प्लस 5 एंड दिस आंसर इज -6x² -10x। कैसे आया? ये एरो देखो, पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, है ना? 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 6x आया, मैंने 6x² लिखा यहाँ पे, 2x इंटू 5 -10, तो ऑल टुगेदर दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? रुबीर आ रहा है आपको समझ में? रुबीर एंड मानसा, Yes, sir. लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, इसको हटा दूं, मैं क्लीन कर दूं, इसको हटा दूं? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल व्हाट यू हैव टू डू, इसमें क्या करना है आपको? फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस टर्म and you have to multiply with this and this, then you have to take this
and you have to multiply with this and this. Are you getting my point? इंडिविजुअली पिक करना है, देन इट विल बी लाइक मोनोमियल्स का मोनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, है ना। मैं ब्लैक वाला ब्लैक से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, ये भी प्लस है। तो आपको क्या करना है, प्लस 2x को मल्टीप्लाई करना है प्लस 4x से। मेंटली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप साइड में लिखोगे। वो कितना आएगा, प्लस 2x को प्लस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8x² बिकॉज 2 into 4 कितना आएगा 8x²। नेक्स्ट दिस 2x को आपको मल्टीप्लाई करना है अगेन विथ दिस 2x प्लस 2x यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ -3 बिकॉज आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, SIGN साइन, then it will give -6x, so I will write -6x. so this portion is done, ये हो गया, this is done. I will remove this one. समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। नहीं है ना, बहुत इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, अदरवाइज गलत आंसर आएगा, माइंड इट। अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किए ना तो आप गलत करोगे। और ओके, नेक्स्ट आई विल टेक द रेड वन। so what is this, plus 5x, not 5 only, plus 5. so we have plus 5 and you have to multiply this plus 5 with 4x. आप इसको ट्रैक करो, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को तो क्या मिलेगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा, 5 into 2 20x। नेक्स्ट प्लस 5 into -3, अगर 5 प्लस 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -15। नाउ यू हैव टू चेक फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर है तो आपको करना है, ओके। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। so see here we have like terms, so we do the further simplification and then I will write the answer, okay। so here further 8x², this simplification is possible, -6x plus 20 it will give plus 14x, this -15 will remain as it is. so this is your answer. so multiplication of this two term is this three term as answer. Understood everyone? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। So if you are done with this question, अगर आपको ये समझ में आया, next question you have to try this one. I am writing here 5y minus 8, नहीं ये वाला नहीं, a minus 3b and minus x plus 5. You have to multiply this, or maybe I'll take minus. नो साइन नीडेड है ना, यहाँ पे साइन देने की जरूरत नहीं है, इसका लिखा है, इसका मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई में ही होते हैं, है ना। Sir, completed with the answer. दिस क्वेश्चन, ये जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया ये भी हो गया, ये वाला ये ट्राई करो ना। a माइनस 3b ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट -x -5 ब्रैकेट, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद द सेकंड फर्स्ट एक्सप्रेशन टू आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है सेकंड एक्सप्रेशन।
if you have different color of pen, I mean different पेन है आपके पास कलर्स के, so you can use different color like I have taken, है ना, red and blue or maybe black, but make sure take with the sign. साइन नहीं भूलना है, साइन को नहीं छोड़ना है, you have to take the sign also. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. हाँ, किसी का आया आंसर? एनीवन? Answers. ओके, सॉल्व्ड एवरीवन? एनीवन? किसी का आंसर आया? तो सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड. लेट मी सॉल्व. यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर. आप आंसर मिला सकते हो, आपका जो भी आंसर आया. ओके, so as I told you, you can use different colors also, है ना. So first of all you have to multiply with this to this and this to this. Next time you have to multiply this whole term with this. जैसे इस टर्म को, ठीक है. So let me write the red one first. So what I have a into minus x. You have to take the sign also. यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है. So प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x होगा. क्या लिखेंगे यहाँ पे? a. नेक्स्ट, प्लस a is multiplied with minus 5. See this red one arrow, ये जो मैंने लाइन बनाया है ना. तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा. एक को अगर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? माइनस 5. राइट, माइनस 5. नेक्स्ट 3b माइनस 3b, है ना, बिकॉज यू हैव टू टेक द साइन आल्सो. माइनस 3b मल्टीप्लाई विथ माइनस x. ठीक है, तो पहले माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा. एंड 3bx इज द फाइनल. नेक्स्ट माइनस 3b मल्टीप्लाई विथ माइनस 5 क्या आएगा बताओ? माइनस 3b को 5 से मल्टीप्लाई कर, माइनस 5 से, ये होगा प्लस 15b. तो प्लस 15b. फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? इज फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? Sir, I think no. No, sir. No, because no like terms in this expression, right? No like terms. x कहीं है क्या? नहीं है. a कहीं है क्या? So final answer is this one. This is your answer. That's it. This is your final answer. Okay, students? Yes, sir. Okay, last question you try. Question, x
plus y multiply with x squared minus xy plus y squared. So the sixth one, right? Yes, ये वाला. Sir, can you move a little bit down? Yes, yes. I A think little question is. bit up, sir. Like my screen is too small. So. Yeah, this is enough, sir. Okay. This is the question. You have to multiply this polynomial, that means this binomial, with this trinomial. Rule is same. Rule is same. You have to take the first term. You have to multiply with each and every term and write down. You have to take the second one with sign, but don't forget the sign. You have to multiply with each and every term of the second expression and write down the each term. If further simplification possible, do it. Otherwise, leave as it is. Do it fast, students. We have to learn division also, and we have to learn identity. Yes, sir. Just a minute. आइडेंटिटीज भी देखेंगे, मल्टी डिविजन्स भी सीखेंगे. ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करो इसको. Okay, so let me solve. You can cross check your answer. So first of all, you will multiply this x with x square, है ना. तो यहाँ पे प्लस x है और इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस एक्स स्क्वायर से. तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स क्यूब. सो नो नीड टू राइट प्लस साइन इन द फर्स्ट टर्म, just directly you can write x cube. Now second, x into, that means plus x into minus xy. You multiply these two, it will get minus x square y. So write minus x square y. Third, x plus x multiply with y square. You write, it will give plus xy square. So plus xy square. Next, black wala. You have to write, or okay, next term, plus y into x square. So it will give plus y x square or plus y x square. Next, y plus y into minus xy. So if you multiply this, it will give xy square minus xy square. Third, plus y into y square, it will give plus y cube. It will be plus y. Do we have like terms here? So I write x cube का like terms नहीं है, so I will write as it is. Now do we have like terms? Yes, we have like terms.
it is x square by, Yes, sir. here also x square by, it is minus and it is plus, so it will give 0. Plus 1 apple minus 1 apple, it will give 0. Now do we have like terms for this? Yes, we have like terms. Okay, so again it will give 0 only, and then y cube, this term. So answer is x cube plus y cube. No need to write 0, है ना? So this is your final answer. So again, do the multiplication, further simplification is possible, then do it and then write the answer. Is this clear, everyone? Yes, sir, it's clear. Okay. Yes, sir. Yes. Write down this as a homework. Maybe you can try this course at your home. So we have done few questions, but for more practice, you can solve this question. Basically, this third one is very, very important. If you are able to solve all the questions from this, that means you know how to multiply algebraic expression. ठीक है? ये आपको very, very, Okay, sir. so you can make a note or you can take a screenshot of whatever. And after that, give heading division of a binomial or maybe polynomial by a Sir, monomial. once can you scroll down? Are you writing this as homework? Yes, sir. Okay, just take a screenshot or maybe picture Yes, sir. and give heading division of a polynomial by a monomial. So in division, we have two things. One is division a polynomial by a monomial and division a polynomial by a monomial. Okay, two different topics. So first topic we will learn division of a polynomial by a monomial. बहुत सिंपल है, ये आपको आता है, इसमें कुछ सीखने के लिए है नहीं नया, बट मैं फिर भी बताऊंगा आप लोग को. ठीक है? So see here, I have an example. If I ask कि divide 8AB by AB, how you can write this? 8AB divided by A and B. So AB is a variable, so you can see, you can this cut it also because ये तो multiply में है. और maybe you can write first. Okay, मैं इसको थोड़ा सा और explain करता हूँ. So 8AB means what? कहीं पे लिखा 8AB, that means 8 into A into B. If AB is written, that means A into B. जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं, अगर कहीं पे लिखा है 2 into 2 into 4 into 5 into maybe 6, and if you have to divide 5 into 6, then what you will do? You just cut it, this 5 with this 5. If you divide this 5 with this 5, you will get 1. If you divide this 6 with this 6, you will get 1. Here same thing. If you divide this A with this A, you will get 1. So answer will be 8 only. क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये तो बहुत सिंपल है. If I ask divide this A divided by AB, that means you have to divide A with AB. This A will get cancelled out. You will get 1 in numerator, B in denominator. If I ask divide x with y, if I ask x को divide करो y से, then further simplification like terms नहीं, then you have to write like this only, है ना? इसको हम लोग further simplify नहीं कर सकते हैं, यही आंसर होगा, यहाँ पे ये आंसर Sir, होगा. can you explain again? ओके, सो इन डिवीजन, अगर आपको मैं नंबर्स का डिवीजन दूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 6 into 5 into 7 into 9, and if I ask to divide it with 6 into 9, then what you will do? ये 6 से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, है ना? तो अल्टीमेटली 35 आंसर रह जाएगा इसमें. वैसे ही अगर मैं 8AB को AB से Understood, डिवाइड sir. करता हूँ, 8AB मीन्स व्हाट, है ना? This 3 example, look carefully. This one, this
second, this is third example. Okay, if you understood, can you simplify this 3, or maybe you can just simplify middle one, this one. Fourth, 35x cube y x z square and divide it by minus 7 x y z. What will be the answer? Okay, so what you have to do here, this number will divide this number with 5 times this x cube. X cube means what? x 3 times है, उसमें अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा. That means you will get x square. If you divide, this y will get cancel out. If you divide, you will get z. So ultimately we will get minus 5x square z. इतना आ रहा है सबको समझ में? रुबीर, लक्ष्य आपको आ रहा है समझ में? लक्ष्य, Yes, sir. ओके गुड. यस सर आ रहा है. ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग पोलो. अच्छा, ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, हम लोग जस्ट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है? नो नीड टू गिव हेडिंग, है ना? सो आई हैव डिवीजन लाइक दिस. सो 6x5 प्लस 18x minus 3x square and you have to divide it with 3x square. Then how to divide? अगर ये फॉर्म है, इसको डिवाइड करना है ना? अगर मैं और इजी लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ x plus y and you have to divide with x, then what you will do? You have to divide each and every term, right? You can write this as this. जैसे हम लोग फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1 और लेट्स से 5 plus 6 divided by 7, then you can write 5 upon 7 plus 6 upon 7. You can write this as this, or maybe you can change. ऐसे इसमें भी करते हैं. ये x है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे भी, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब ये हुआ. अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे डिवाइड होते 1, और ये डिवाइड नहीं होगा देन यू लीव एज इट इज. ओके, same thing here. You have to separate them. If further simplification is possible, you have to do it, otherwise leave as it is. Are you getting my point, students? आ रहा सबको समझ में? Yes, sir. So here if you divide, you will get 2x square because क्यूब मिलेगा ना, because 5 में से 2 कट हो जाएगा, you will get 2x. Here you will get 6x square and this will give 1 only, and this is your final answer. Understood everyone? Yes, sir. Okay, so we will learn some identities. So give heading algebraic Sir, once identities. can you scroll up, sir? Okay, I'm just cross-checking my answers, sir. That's why. sure. You check your answer. So if you divide this whole polynomial with this monomial, it means you have to divide each and every term separately. And if further simplification is possible, do it. Otherwise, you leave it. Like here, यहाँ पे y upon x possible नहीं है, तो वैसे ही छोड़ देंगे. Sir, I got the correct answer. Good. Okay, good. So next heading is algebraic identities.
So identity number 1, this is not new to you, again I will explain या कहाँ से आया, ठीक है, a plus b का whole square. What does it mean? It means a plus b into a plus b, right? होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? x into x, है ना? So this bracket means you have to multiply this whole term 2 times. Okay, and if you multiply it, how to multiply? We know the multiplication, a into a square, a into b, that will give ab. Now you have to multiply this b with a, this will give ba. और आपको बताया था a b लिखो या ba लिखो, both are the same, and then this with b square. Now these two are identical or right terms, so I will write this as 2ab, and so this is a formula, or you can memorize this formula. Okay, a plus b का whole square, so a one term plus, in between we have plus sign, then whole square, it will give a square plus 2ab plus b square. ठीक है, so just write it down and you have to memorize it. It is called identities. So if somewhere it is written like this, you can write like this. It is, if it is written, you can expand this, है ना, इसको expand करते हैं, है ना. So expansion of this is this way. So instead of doing this multiplication, you can memorize this formula. Okay. Next, if I have a negative sign like a minus b whole square, so if you place the minus, same thing, you multiply 2 times, minus will come. So a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. So instead of doing multiplication every time, be memorize this formula, so that calculation will be fast. Okay, calculation easy भी होगा और fast भी होगा, ठीक है. तो कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर. सी ओनली डिफरेंस यू कैन फाइंड इन द, ओके. थर्ड, राइट डाउन थर्ड आइडेंटिटी, a square minus b square is equal to a minus b bracket a plus b. So if anywhere it is written like this, you can write in this form, है ना, कहीं पे ऐसा लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं. You can interchange them. So this is very very important. And fourth one is this one. So write down this 4. तो अगेन ए भी एक वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है, मे बी एक्स हो सकता है, मे बी वाई हो सकता है, और मे बी 3a हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट यू हैव टू ट्रीट लाइक वन टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, देन फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर 2ab, देन b स्क्वायर. So you have to treat them like a term, okay, not ab. Always a मिलेगा. Maybe you will get xy, maybe t, maybe uv or wx, anything. Noted everyone? Sir, These 4 I identities. understood. Yes, sir. Noted. Okay, so based on this, you have to solve this question. So expand this. So if you understood, you have to solve these two. Expand each of the following. Expand this of the following. So you have to use the concept of identities and then you have to expand. Okay, so let me do one question for you and then you can try second question. So I told you it is not always you will get a and b, you will get x, y, u, v, anything. So this is one term minus second term. Okay, whole square. So what is the formula? What is the identity? We have identity a square minus 2ab plus b square, right? B square. So same thing. So a की जगह पे क्या है यहाँ पे? This is like a and this is like e. So instead of a, you have to use 3x. So write down 3x whole square minus 2 3x
bracket 4y plus this is b square, that means 4y whole square, and solve them. So if you multiply 3x into 3x 2 times, what you will get? You will get 9x square. This 2 into 3 into 4, how much? 24. X into y, xy, plus 4y into 4y, that is 60y square. So this is the expansion and this is the answer. Same way try this question. Same way try this question and this question, these two questions. So product of these two and expand this. Yes, sir. स्टूडेंट सो सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। इसमें भी इसको एज ए ट्रीट करना है, इसको एज ए बी, एंड यू हैव टू यूज द एक्सपेंशन का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दिस व्हाट इज द आंसर? 2x plus 3y and 2x minus 3y. So look at this question. You can see this is one term, this side, one term, second term, minus sign. If you can recall, this was the formula. I told you कि इसको हम, है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर. So it will directly give me answer x square minus 9y. Okay, students, so you can take this question as a homework. You can try at home, at your home, maybe this question. Leave this question, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So this question you can try. You have to use the identity, not कि multiply करने चले गए, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना? If you use the Sir, identity, which question? this second one, Okay, sir. find the product. So again, if you don't know the identity, it will be very easy, right? But if you know the identity, it is very easy to multiply. A plus b, a minus b, a plus b, a minus b, you have to use. Okay, students, so that's it for today class. I hope you understood everything. Yes, sir. It was very clear, sir. Okay, good, Thank you, sir. Have a great day. good, good everyone. Bye bye, take care. Thank you, sir. Bye.